In this video, we will continue with the pituitary gland, which was started in the last video while discussing of the hypothalamus. So, as I had already told you that pituitary gland is also known as the master endocrine gland, and it is under the control of hypothalamus. You must be remembering this. The commander is hypothalamus. It is secreting some hormone through the portal circulation, which reaches the pituitary gland, which is in turn release different hormones to control the other glands of body. Okay? So now talking of the pituitary gland, as you all know that pituitary gland is located just below the hypothalamus. So pituitary gland, it means, is located into the brain, and pituitary gland is the smallest endocrine gland. We are not talking overall, but we are talking about around the endocrine glands. Endocrine glands you must be knowing. So pituitary gland, I had already told you that there are three lobes in the pituitary gland: the anterior lobe, the intermediate lobe, and the posterior lobes, and the various hormones are secreted by the different lobes. So in this video we are going to study the function of the different hormones which is secreted by its lobes. So first we are talking of the anterior lobe. The anterior lobe of pituitary is also known as adenohypophysis or pars distalis. So this anterior lobe secretes a hormone known as growth hormone, and it is also named as somatotrophin. Growth hormone, as the name suggests, it promotes the growth and development of the body. It is promoting the growth and development of bones, muscles, and we can say the complete body. So if the hormones are in imbalanced ratio, then it causes various diseases. As you can see, when the hormone is in excess, it causes giantism. Giantism means the abnormal excess growth, right? When a person is too tall, 6.5, 7, 8, 9, इस तरीके की too tall जो height है, that is due to the excess of the growth hormone. Next, if the growth hormone is in insufficient amount, then it will cause dwarfism. Dwarfism means a stunted height. Okay? But in some cases, the growth hormones increases after reaching the adult age. So if the growth hormone increases after reaching the adult age, it causes acromegaly. Acromegaly is a condition when the bones of face, hands, and feet start increasing after reaching the adult age. So this is a growth hormone which is released by the anterior lobe, and of course it is very important. Next, the second hormone released by the anterior lobe is the thyroid stimulating hormone, which is indicated as TSH. As the name suggests, this hormone is released to activate the thyroid gland. Another hormone, adrenocorticotropic hormone, ACTH, yani adrenal gland. So this hormone, when is released by the pituitary, then it goes and activate the adrenal gland. These glands are located over the kidney, and we will discuss about it later on. Then the next hormone is prolactin. This prolactin in case of females are released, and these prolactin acts on the mammary glands of female so that they can produce milk. So this hormone is increased in level during the pregnancy. So is also known as the maternity hormone. नेक्स्ट इज अ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. सो यहाँ पर नाम से पता लग रहा है फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा. तो इसमें क्या होता है, अगर मेल्स है तो उसमें स्पर्म का डेवलपमेंट, एंड फीमेल्स है तो ओवम का डेवलपमेंट. बट ऑब्वियसली बात है, ये जाके कहाँ एक्टिवेट करेगा, इट विल एक्टिवेट testes in case of males and ovary in case of females, so that the testes and ovary can give rise to sperm and ovum respectively. Another hormone released by the anterior pituitary is the luteinizing hormone. So luteinizing hormone, we will also discuss about this hormone later, but still I try to understand. Luteinizing hormone in case of males acts on the testes. Inside the testes of males, there are some cells which are known as Leydig cells, and when these LH act on the Leydig cell, then these Leydig cells releases androgen. Androgen means the male sex hormones like testosterone. So male sex hormone testosterone is released by the Leydig cell when
LH यानी luteinizing hormone from the pituitary gland activate these cells. Same in case of females, LH acts on the ovary and ovary पे act करने के बाद it causes ovulation. Ovulation मतलब होता है ovum का release होना. ओवरी से ओवम रिलीज होगा और फेलोपियन ट्यूब में आ जाएगा. दिस इज कॉज्ड बाय द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. सो ये जो हार्मोन्स हमने पढ़े वो थे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के. अब बात करेंगे हम इंटरमीडिएट लोब की. तो देखिए अब हम बात करें इंटरमीडिएट लोब यानी कि पार्स इंटरमीडिया की. सो पार्स इंटरमीडिया एक ही हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH. एक ग्लैंड है जिसके बारे में अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज द पीनियल ग्लैंड विच इज ऑल्सो लोकेटेड इन द ब्रेन. सो ये जो पीनियल ग्लैंड है उसको एक्टिवेट करने का काम करता है. नेक्स्ट इज द पोस्टीरियर लोब, ठीक है, जिसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस या पार्स नर्वोसा भी बोला. इसे न्यूरो हाइपोफाइसिस इसीलिए कहा क्योंकि आपको याद हो या फिर आप इस डायग्राम में देखिए, जो पोस्टीरियर लोब है उसमें डायरेक्टली ये न्यूरॉन्स ही वहाँ तक पहुँचे थे और उन्होंने ही अपने हार्मोन यहाँ रिलीज़ कराए थे, इसीलिए इसको नाम दिया न्यूरो हाइपोफाइसिस या पार्स नर्वोसा. सो इट रिलीजेस 2 हार्मोन्स, oxytocin and antidiuretic hormone. So oxytocin is also a maternity hormone as it causes the release of milk from the mammary gland. Don't get confused. Prolactin causes the production of milk and oxytocin causes the release of milk. ठीक है. Another function of oxytocin is during the childbirth. चाइल्ड डिलीवरी के टाइम या बर्थ के टाइम यूट्रस को, मदर के यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है so that child can be expelled out. Another hormone released by the posterior lobe of pituitary is the antidiuretic hormone or the vasopressin. This hormone is also studied by you during the excretion topic. So it causes the absorption of sodium and water from the DCT, distal convoluted tubule of nephron. You must be remembering them. So these are the 9 hormones of the master endocrine gland. So they are released in order to control the various functioning of the body. Now let us talk of another hormone. So we have studied yet 2 hormones. One is the hypothalamus, 2 glands. One is the hypothalamus, another is the pituitary gland. So let us talk of the other gland. So a hypothalamus is located in brain, pituitary is located in brain. So let us talk of a gland which is also located in the human brain. So in human brain one more gland is located, that is called the pineal gland. So hypothalamus gives order to the pituitary gland and pituitary gland releases MSH, melanocyte stimulating hormone. आप पूछेंगे हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज़ किया? इसने रिलीज़ किया मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, यानी जो भी हार्मोन है उसके पीछे रिलीजिंग हार्मोन लगा दो. तो हाइपोथैलेमस ने रिलीज़ किया मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, पिट्यूटरी ने रिलीज़ किया मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो कौन सा ग्लैंड एक्टिवेट हो गया? यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है पीनियल ग्लैंड. तो चलिए देखते हैं पीनियल ग्लैंड के बारे में. तो पीनियल ग्लैंड जो है इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन द फोर ब्रेन. सो पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं हम लोग. जो पीनियल ग्लैंड है वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है, दैट इज़ कॉल्ड द मेलाटोनिन हार्मोन. सो मेलाटोनिन हार्मोन को हम स्लीप हार्मोन भी कहते हैं. बड़ा इंपॉर्टेंट है ये स्लीप हार्मोन, या बायोलॉजिकल क्लॉक इसका नाम है, ये ज़रूर याद रखना है. पूछ लिया जाता है कौन है बायोलॉजिकल क्लॉक, तो मेलाटोनिन हार्मोन है. ऐसा क्यों कहा या स्लीप हार्मोन क्यों कहा? क्योंकि जो पीनियल ग्लैंड है वो मेलाटोनिन रिलीज़ करता है और मेलाटोनिन स्लीप प्रमोट करती है. ठीक है, तो जो डार्कनेस होती है इसमें ये और ज़्यादा रिलीज़ होता है, इसीलिए लाइट्स वगैरह ऑफ होती है, तो जो है ये रिलीज़ होता है और हमें इजीली नींद आ जाती है. ठीक है, इसके अलावा ये लिखा है ना, इट सिक्रीशन इंक्रीजेज इन द डिम लाइट एंड डिक्रीजेज इन ब्राइट लाइट. तो तेज़ रोशनी में कम सिक्रीट होता है और ज़्यादा जो है डिम लाइट में ज़्यादा सिक्रीट होता है. इसे बायोलॉजिकल क्लॉक इसीलिए कहा क्योंकि ये सर्काडियन रिदम्स, यानी आपकी जो 24 आवर्स की जो रिदम होती है बॉडी की, रूटीन जो है आपका सोना जागना जो भी ये रूटीन है वो कंप्लीट रूटीन मेंटेन करने का यही काम करता है. आपने देखा होगा जिस टाइम पर आप यूजुअली सोते हैं उस टाइप पे आपको ज़रूर नींद आती है. इसके अलावा स्किन कलर को भी लाइटन करता है ये कुछ के अंदर. तो ये 3 आप इसके याद रखेंगे. 1 इट प्रमोट्स स्लीप, another it is called biological clock because it is maintaining a 24-hour rhythm, and the third one that it is
lightening the skin color. So these are the three glands which are located in the brain. So in the next video we will move to the neck where we will study about the thyroid and the parathyroid gland.